Dear student, today we shall start with the new chapter, next chapter, second chapter. Differential geometry of surface. Differential geometry of surface. डेफिनेशन है जी सरफेस की. सरफेस की डेफिनेशन है द लोकस ऑफ द पॉइंट the locus of the point whose coordinates whose coordinates whose coordinates are the functions of the independent parameters u and v is called the surface. That is, x is a function of u and v. u और v जो है ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है. y जो है this is also function of u and v and z is function of u and v. u और v जो है ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं. The above equations are the parametric of surface. रिमार्क्स है जी. रिमार्क्स में लिखेंगे from the parametric equations of the form of elimination of u and v from above equations
yield the equation of the surface, that is is equal to C, where C is constant and this type of equation is in implicit form. ये जो सरफेस की इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन बनती है सरफेस की, जब आप u और v को इन तीन रिजल्ट्स में से जब आप u और v को एलिमिनेट करते हैं तो ये आपके पास जो इक्वेशन आती है ये आपके पास सरफेस की इक्वेशन आती है और ये इम्प्लिसिट फॉर्म में आती है, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं आती है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सरफेस इन इम्प्लिसिट फॉर्म. An equation of the form of z is equal to an equation of the form of z is equal to f of xy or x3 is equal to is also called equation of surface. ये भी आपके पास सरफेस की इक्वेशन आएगी. एग्जाम्पल्स हैं जी, एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस. नंबर 1, ये एग्जाम्पल 1 है. द पैरामीट्रिक इक्वेशंस of a sphere centered at origin having radius equal to ए आर. कौन कौन से बनते हैं जी? x इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा कॉज ऑफ फाई, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, z इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा ए कॉज ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई और z इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा.
ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती हैं जी स्फीयर की, एलिमिनेटिंग थीटा एंड फाई, eliminating theta and phi from above equations. X square plus y square plus z square, ये आपके पास आएगा जी a square cos square theta cos square phi plus a square cos square theta sin square phi plus a square sin square theta.